Bismillahirrahmanirrahim, starting with the great name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Dear students, hope you will be safe and sound under the special blessing of Almighty Allah. Previously, we have discussed the unit number first page, second page, and we have discussed the mind map. And apart from that, we have discussed a verse from the Holy Quran and certain example of the life of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So today we will discuss the unit number second, unit number first, page number third. All of you have to open the page number third of your book. So let's come to the page number third. During this situation, the Holy Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam remained calm and tolerant and never thought about taking any sort of revenge. Even after he had conquered Makkah, the Holy Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam taught his followers to remain tolerant. After the conquest of Makkah, the Muslim army entered Makkah humbly and peacefully. No house was robbed, no man or woman was insulted. The Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam granted a general amnesty to the entire population of Makkah. So let's discuss the difficult meaning, and apart from that, certain grammatical points and also the meanings. During this situation, in halat mein, the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, remained calm, खामोश रहे, and tolerant, और साबिर और बुरबार्द रहे, बुरबार्द, साबिर, and never thought, और कभी भी नहीं सोचा, about taking any sort of revenge, किसी भी किस्म के इंतकाम के बारे में, किसी भी किस्म के इंतकाम के बारे में. Revenge mean इंतकाम. Another word we use for the revenge is retaliation. Retaliation mean इंतकाम लेना. इसे हम एक idiom भी यूज करते हैं, an eye for eye, के आंख के बदले आंख. तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फतेह मक्का किया तो इसी दौरान वो साबिर रहे और खामोश रहे और किसी भी किस्म के बारे, किसी किस्म के इंतकाम के बारे में नहीं सोचा. Even after, हालांकि he had conquered Makkah, वो मक्का फतह कर चुका था. The Holy Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam taught his followers. The Holy Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, as Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ने taught. The correct pronunciation of this word is taught. Taught means सिखाया, तलकीन करना, and taught is the second form of a teach, taught. His followers mean पैरोकारों को. आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरोकारों को तलकीन की to remain tolerant, कि वो बुर्दबार रहे. To remain tolerant, कि वो बुर्दबार रहे. After the conquest of Makkah, फतेह मक्का के बाद, after the conquest of Makkah, after here used as an adverb. After is used as an adverb here. The conquest of Makkah, फतेह मक्का के बाद, the Muslim army, मुसलमान अफवाज या मुसलमान फौज entered, दाखिल हुई, मक्का में. Entered here is a verb and the second form of verb is used here. Humbly, आजिज़ी के साथ. Humbly mean आजिज़ी के साथ. And peacefully, और पुरअमन तरीके से. And peacefully, और पुरअमन तरीके से. हालांकि फतेह मक्का के बाद मुसलमान फौज मक्का में आजिज़ी और पुरअमन तरीके से दाखिल हुई. No house was robbed. No house was robbed. This is the passive structure. ये passive structure है. No man or woman was insulted. It is also used as a passive structure. No house was robbed. किसी भी घर को नहीं लूटा गया. ना तो किसी घर को लूटा गया
No man or woman was insulted. Insulted mean बेहुरमती, बेइज्जती, ना किसी मर्द या औरत की बेइज्जती की गई. The Prophet sallallahu alaihi wasallam granted mean फराहम करना, अता करना, नवाजना. Granted mean नवाजना, अता करना, फराहम करना. A general amnesty, general amnesty, माफी. General amnesty mean when you give pardon to all of the people, even the old, young, and your enemies. This is called general amnesty. The correct pronunciation of this word is amnesty. The Prophet sallallahu alaihi wasallam granted a general amnesty as Muhammad sallallahu alaihi wasallam ने एक आम माफी अता की to the entire population of Makkah. मक्का के तमाम आबादी को. आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के तमाम लोगों को आम माफी अता की या मक्का के तमाम लोगों को आम माफी नवाजी. After the conquest of Makkah, Fateh Makkah के बाद, when everybody is gathered in Hana Kaaba, after he is also used as a adverb, and when is an also adverb. But here when is also used an adverb. Everybody, it is indefinite pronoun. Indefinite pronoun we use to जनरलाइज समथिंग. जब हम किसी चीज को जनरलाइज करते हैं, जब हम स्पेसिफिक बनने की बात नहीं करते, वी यूज द इंडेफिनिट प्रोनाउन. व्हेन एवरीबॉडी, जब हर कोई गैदर्ड, इकट्ठे हुए इन हाना काबा में. आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ मक्का, फतेह मक्का के बाद, व्हेन एवरीबॉडी गैदर्ड इन हाना काबा में जमा हुए, जब सारे लोग हाना काबा में जमा हुए, द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड द पीपल ऑफ कुरैश, asked the people of Quraysh. आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के लोगों से पूछा या कुरैश के लोगों से कहा, what do you expect at my hands? Expect at my hands mean आप मुझसे क्या तवक्को रखते हो, आप मुझसे क्या तवक्को रखते हो. At my hands here is used as a idiomatically. It is means okay, what you are expecting from me. The Holy Prophet ﷺ said to the people of Quraysh that what they were expecting from the Holy Prophet ﷺ. Even they tortured the Holy Prophet ﷺ. Even they want to kill the Holy Prophet ﷺ. Nauzubillah. But their all strategies, their all commitment failed. So the Holy Prophet ﷺ asked the people of Quraysh, as Muhammad ﷺ ने Quraysh के लोगों से कहा, what do you expect at my hands? आप मुझसे क्या तवक्को रखते हो? They all shouted in one voice. तो वो सारे यक जुबा या यक जुबा होकर चीहे या यक जुबा होकर बोले, kindness, मेहरबानी, and pity, रहम, gracious brother, Rahim bhai. Gracious mean Rahim, Azim. Gracious here used as adjective. Brother is a noun. So here it is modify the brother, and here the gracious modify the nephew. Gracious brother, Rahim bhai, gracious nephew, Aziz Batiji. They were not disappointed. They were not disappointed. It is also used passive structure. उनको मायूस नहीं किया गया. They were not disappointed. उनको मायूस नहीं किया गया. The Holy Prophet ﷺ, Muhammad ﷺ, said the same forgiving words. As Muhammad ﷺ ने said, फरमाए the same forgiving words. वही माफी के अल्फाज, same forgiving words, माफी के अल्फाज, वही माफी के अल्फाज. As Prophet Yusuf alayhi salam, जैसे कि यूसुफ alayhi salam ने had said to his brother, अपने भाइयों को कहे थे, have no fear this day, have no fear this day.
आज के दिन तुम पे कोई गिरफ्त नहीं, नो फियर मीन कोई डर, कोई गिरफ्त नहीं। मे अल्लाह फॉरगिव यू, अल्लाह आपको माफ करे। एंड ही इज द मोस्ट मर्सीफुल, और वो सबसे ज्यादा मेहरबान टू दोस, उन लोगों के साथ who show mercy, जो दूसरों पे रहम करे। Here we hear the word may is used. May is called modal auxiliary. Modal auxiliary shows us what command. It's modal auxiliary or modal helping verb is used is when is used for command, request, obligation, etc. May Allah forgive you. And after the modal auxiliary, we use the first form of verb. Like in optative sentences are those sentences in which we wish someone, which we pray someone. जब हम किसी को दुआ देते हैं तो उसको ऑप्टेटिव दुआइया जुमले कहते हैं। May Allah forgive you, अल्लाह आपको माफ कर ले। And he is the most merciful, और वो सबसे ज्यादा मेहरबान है टू दोस, उन लोगों के साथ who show mercy, जो दूसरों पे रहम करे। Here all those who letter which is used, all those word which is used for the God only Allah, जब अल्लाह के लिए जितनी भी अल्फाज यूज की जाती है, the first letter of that word will be capital, उसका first letter जो होगा वो capital होगा। Here he, इसका H जो है कैपिटल है, मोस्ट का M कैपिटल है, मर्सीफुल का M कैपिटल है। Look at here and apply these things in your writing. Whenever you are writing about the God and about the Allah, so you will use H capital M, all those adjective are used for the God, you will use it capital, the first initial letter. May Allah forgive you, Allah आपको माफ करे। And he is the most merciful, और वो सबसे ज्यादा मेहरबान है टू दोस, उन लोगों के साथ who show mercy, जो दूसरों पे रहम करे। Here in this line it shows when the Holy Prophet Sallam conquered Makkah, and the Quraysh, especially the Quraysh, they were the enemies of the Holy Prophet Sallam and his family. When the Holy Prophet Sallam living in Shaykh Abi Talib, so Hazrat Muhammad Sallam forgave all these people and said the same forgiving words as the Prophet Yusuf al-Islam had said to his brother. Okay, so let's come to the next paragraph. The Holy Prophet Sallam even forgave Abu Sufyan and his wife, who were the worst enemies of the Prophet Muhammad Sallam and Islam. He plotted many times against the Prophet Sallam, but the Prophet Sallam never did so. Okay, keep in mind the Holy Prophet Sallam even forgive. As Muhammad Sallam ne maaf kiya. Forgive, it is the second form of verb of the forgive, F-O, forgive, F-O-R-G-I-V-E, forgive. Holy Prophet Muhammad Sallam even forgive Abu Sufyan. Hazrat Muhammad Sallam ने हालांकि अबू सुफियान को भी माफ किया, his wife और उनकी बीवी, who were the worst enemies of Islam. Worst enemies mean बदतरीन दुश्मन. Worst here is used as adjective, worst, and enemies as a noun. बदतरीन दुश्मन, worst enemies mean बदतरीन दुश्मन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालांकि अबू सुफियान और उनकी बीवी को भी माफ किया, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और इस्लाम के बदतरीन दुश्मन थे। जो आपको पता है, you know that the wife, the Holy Prophet, the wife of the Abu Sufyan, and they were the worst enemies of the Holy Prophet Sallam. Why? Because they plotted many times against the Holy Prophet Sallam, and even they killed both of these wife and husband, who killed his dearest uncle, Amir Hazrat Hamza, who mostly supported the Holy Prophet Sallam through everything and thin. So the Holy Prophet Sallam even forgive these worst enemies of Islam. He plotted mean mansuba bandi karna, साजिशें करना. He plotted, उन्होंने अबू सुफियान ने और उसकी बीवी ने plotted, मंसूबाबंदी की, साजिशें की many times, कई मर्तबा
against the Holy Prophet sallam, Hazrat Muhammad sallam ke khilaf, but the Prophet sallallahu alaihi wasallam never did so. लेकिन Prophet Muhammad sallam ने कभी ऐसा नहीं किया. Never did so mean कभी भी ऐसा नहीं किया. But here is used as a conjunction. Okay. Never is added verb, adverb of negation here used. Okay, next we will move towards the story of Rabbi Zayd. Rabbi Zayd is, who is Rabbi Zayd here? Rabbi Zayd, before going to discuss here, I will read the whole paragraph. Similarly, the story of Rabbi Zayd is one of the such epitome of learning from Muhammad's practices, which reflects tolerance towards others. Once Prophet Muhammad sallam attended the funeral of a man from the Ansar. Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman, and some other companions were with him. After the funeral prayer, the Holy Prophet ﷺ sat down close to a well. A Jewish Rabbi, Zayd ibn Sana, came towards him. He grabbed the Holy Prophet ﷺ by the edges of his cloak, looked at him in a harsh way, and said, "Oh Muhammad, will you not pay me back my loan? I have not known the family of Abdul Muttalib to delay in repaying debts." Similarly, it is used as a transitional device. Similarly, transitional device mostly functions as a conjunction, but here the difference between the conjunction and transitional device. What is the transitional device? Transitional device are those words which link one idea to another. Look at here. Similarly, it links the previous lesson, the previous examples with here the story of Rabbi Zayd. Similarly, इसी तरह the story of Rabbi Zayd, Rahib Zayd, Rabbi. It is Rabbi mean a Jewish scholar, a Jewish mean एक यहूदी राहिब कहते हैं, यहूदी आलिम कहते हैं, is one of such epitome, not the correct pronunciation of this epitome. The Rabbi Zayd is one such epitome of learning from Muhammad's practices. Epitome mean common namuna hai of learning, सीखने से, of learning सबक है from Muhammad's practices, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से. इसी तरह रबी ज़ैद की कहानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी से सबक सीखने का एक कामिल नमूना है. या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल से सीखने का एक आला नमूना है. प्रैक्टिसेस आमाल which reflects mean आकाशी करती है, which reflects जो आकाशी करती है, tolerance बर्दाश्त की towards other दूसरों के साथ. Here Rabbi Zayd, who is a Jewish scholar, wanted to take test of the Holy Prophet ﷺ tolerance. So this is the whole story related to the tolerance of the Holy Prophet ﷺ, tolerance and perseverance, compassion, which reflects tolerance towards others, जो दूसरे के साथ बर्दाश्त की आकाशी करती है. Once Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, once एक मर्तबा, once is also used as an adverb. Attending funeral, नमाज जनाजे पे हाजिरी दे रहे थे. अदा करना, हाजिरी देना. From a man, funeral of a man from Ansar, Ansar से. एक मर्तबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार से एक आदमी के नमाज जनाजा पे हाजिरी दे रही थी या अदा कर रही थी. हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु and some other companions were with him. हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु and some other companions. Companions means साथी सहाबे किराम. Companions means साथी सहाबे किराम with him. आप सल्लम के साथ थे. Means these are the four caliphs which we know, the caliphs of the Islam. These are the four caliphs, three caliphs, Hazrat Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Osman और दूसरे सहाबे किराम आप सल्लम के साथ थे.
After the funeral prayer, नमाज जनाजा के बाद, the Holy Prophet ﷺ sat down close to a wall. आप सल्लम एक दीवार के साथ तशरीफ फरमा गए, एक दीवार के साथ टेक लगाई आप सल्लम ने तशरीफ फरमाए. एंड अ जीविश रबी, और एक यहूदी राहिब ज़ैद इब्न सना, जिसका नाम ज़ैद इब्न सना था, केम टूवर्ड्स हिम, आप सल्लम की तरफ आया, आप सल्लम की तरफ बढ़ा. ही ग्रैब्ड, ग्रैब मीन जोर से पकड़ना, ग्रैब्ड जोर से पकड़ना, जोर से पकड़ लिया. द होली प्रॉफिट सल्लम, आप सल्लम के by the edges of his cloak. Cloak mean चोगा, edges mean किनारा, cloak mean चोगा, edges mean किनारा, grab mean जोर से पकड़ना. And a Jewish rabbi, एक यहूदी राहिब, ज़ैद इब्न सना, जिसका नाम ज़ैद इब्न सना था, came towards him, आप सल्लम की तरफ बढ़ा. He grabbed, उन्होंने पकड़ लिया, जोर से खींचा, the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम by the edge of his cloak, आप सल्लम को चोगे के किनारों से पकड़ लिया, जोर से खींचा. Look at him in a harsh way, और उनको गुस्सीली नजरों से देखा, गजबनाक निगाह से देखा. In a harsh way here also use another meaning, गुस्ताहाना नजरों से देखा. Look at him in a harsh way, और गजबनाक निगाहों से देखा. And said, और फरमाया और कहा, ओ मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. Oh, here also in the first lesson, in the starting of the lesson, I have told you that the O word is used as a vocatives. Vocatives are those words when we use it to addressing someone, to जब हम किसी को मुहातिब करते हैं, जब हम किसी को बुलाते हैं, तो हम ये अल्फाज यूज करते हैं. दैट इज कॉल्ड वोकेटिव्स इन ग्रामर. ओ मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, will you not pay me back my loan? Here it is, this sentence is interrogative sentence, ओ मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, will you not pay me back my loan? क्या तुम मुझे अपना कर्ज वापस नहीं करोगे? क्या तुम मुझे अपना कर्ज वापस नहीं करोगे? I have not known the family of अब्दुल मुत्तलिब, क्या मैं अब्दुल मुत्तलिब के खानदान के बारे में नहीं जानता? I have not known the family अब्दुल मुत्तलिब, क्या मैं नहीं जान चुका हूँ अब्दुल मुत्तलिब के खानदान के बारे में? Here have not known, have is used as perfective auxiliary. After the have we use third form of verb. Remember, have, had, has. After these perfective auxiliary, we use the third form of verb. If it is the word, the sentence is a negative, so definitely if the sentence is negative and interrogative in all aspects, we will use the third form of verb. I have not known the family of मुत्तलिब, क्या मैं अब्दुल मुत्तलिब के खानदान के बारे में नहीं जान चुका हूँ? To delay in repaying debts, कि वो कर्ज की अदायगी में, डिले मीन ताहीर करती है, डिले मीन ताहीर करना, इन repaying अदायगी, डेब्ट्स कर्ज की. क्या मैं अब्दुल मुत्तलिब के खानदान के बारे में नहीं जान चुका हूँ कि वो कर्ज की अदायगी में ताहीर करती है? After seeing what the Rabbi did to the Prophet sallam, इसके देखने के बाद, after seeing, इससे देखने के बाद what the Rabbi did to the Prophet Muhammad sallam, जो राहिब ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया. हजरत उमर्स eyes, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के आंखें swelled with anger, गुस्से से सूज गई, गुस्से से लाल हो गई. He looked at रबी, और उन्होंने रबी राहिब की तरफ देखा. And said, और कहा, O enemy of Allah, ए अल्लाह के दुश्मन, do you talk to the messenger of Allah?
क्या तुम अल्लाह के पैगंबर से इस तरह बात करते हो, अल्लाह के पैगंबर से इस तरह बात करते हो। एंड बिहेव मीन बर्ताव, और उनके साथ इस तरह बर्ताव करते हो। इन दिस मैनर, इस तरीके से। रबी डिड, आफ्टर सीइंग व्हाट द रबी डिड टू द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसे देखने के बाद जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रबी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया। हज़रत उमर से we here the word s has been used with umars. It is used as a apostrophe. When we use apostrophe, we use apostrophe for two purposes. For how many purposes? For two purposes. Hazrat Umar's apostrophe, here the s is used as apostrophe. Apostrophe we use for two purposes. हम दो मकासद के लिए यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, ऑनरशिप। हम ऑनरशिप के लिए यूज करते हैं। किस चीज के लिए? ऑनरशिप के लिए, मलकियत के लिए। जिस तरह अलीस बेग, अलीस बुक। जब हम किसी चीज की कोई शख्स मलकियत रखता है तो इसके लिए यूज करते हैं फर्स्ट। एंड सेकंड, वी यूज इट फॉर contraction. What is contraction? When we write in writing, we use shortened form of something, like did not की जगह didn't लिखते हैं, cannot की जगह can't लिखते हैं, और word को omit करते हैं, तो वहां पर हम apostrophe use करते हैं। So here this is used as apostrophes. Rabbi did to the Prophet ﷺ. After seeing what the Rabbi did to the Prophet Muhammad ﷺ, इसे देखने के बाद जो हजरत रबी ने हजरत मोहम्मद ﷺ के साथ किया, हजरत उमर's eyes swelled with anger. हजरत उमर उनके आंखें गुस्से से सूज गई, लाल हो गई। He looked at the Rabbi, उन्होंने राहिब की तरफ देखा, and said, और कहा, O enemy of Allah, ए अल्लाह की दुश्मन, do you talk to the messenger of Allah? क्या तुम अल्लाह के पैगंबर से इस तरह बात करती हो? एंड behave towards him in this manner, और इस तरीके से पेश आते हो या बर्ताव करते हो। behave mean बर्ताव, पेश आना, manner तरीके से। this word is used for two purposes. One is this manner. This is used as adjective here, and this word is called demonstrative adjective here. This manner, it modifies the manner. Manner is a noun here. This word is called demonstrative adjective. The Rabbi turned away. The Rabbi turned away, and Prophet Muhammad ﷺ said to Hazrat Umar, you should have given a sincere counseling rather than act as you did. Go and repay him his loan and give him 20 saf measurement of extra because you scared him. The Rabbi turned away. Rahib chala gaya. Turned away mean chala gaya. वापस हो गया, वापस चला गया। And Prophet Muhammad sallam the Rabbi turned away, राहिब चला गया, वापस चला गया। And Prophet Muhammad sallam said to the Hazrat Umar, और पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया, you should have given a sincere counseling. You आपको should have देनी चाहिए थी, given us हमें, sincere counseling हुलूस बरी मुशावरत, आपको हमें हुलूस बरी मुशावरत देनी चाहिए थी। Given us, have given us, should here used as a modal verb, sincere as adjective, counseling as a gerund. Gerund here act as a noun, gerund works as a noun. Sincere counseling, हुलूस बरी मुशावरत देनी चाहिए, rather than act as you did, बजाय इसके जो आपने किया।
बजाय इसके इस तरह आपने किया। गो जाओ and repay him his loan, और उनको अपना कर्ज अदा करो। Go here, this sentence is a command sentence because mostly the command sentence starts with a verb. Go. It is used as, this sentence is called command sentence because mostly the command sentences starts and give him 20 sa, और उनको 20 सा इजाफी दो। measurement of weight, पैमाइश का एक आला। It is enough, and if you have any question you can ask, if you have any query you can ask. Raise your hand if you have any question. Sayyid Ahmad Walara. Assalamu alaikum, sir. Walaikum Assalam. How are you students? Sir, I'm fine. Sir, demonstrative adjective के बारे में बताएं. Okay, demonstrative adjective are those adjective, mostly demonstrative word has been derived from a Greek word demo. Demo mean to point out something. Point out something जब हम किसी चीज को इशारा करते हैं, like that boy, that girl, that book, that उस चीज के लिए यूज करते हैं जब दूर की चीज होती है, ठीक है। एंड this जो है करीबी चीज के लिए, that, this, these and these are called demonstrative adjectives. Mostly when a demonstrative pronoun is, Thank you, sir. okay, listen, when demonstrative pronoun acts as a demonstrative adjectives, pronoun जब adjective की तरह function करे, that is called demonstrative adjective. Anything else, if another student wants to ask any question? Anyone else? Yes, Omaiza. Open your mic, Omaiza. Sir, which part of speech is counseling? Counseling mostly, if we talk about the gerund mostly ing form, which function, first form of verb plus ing, which functions as a noun, that is called gerund, and it is mostly functions as a noun, so it is here as a noun. Is it clear, Omaiza? Are you getting? Varda? Excuse me, sir. What Yes, I'm listening. is The voice is not clear. Varda? and third form of forgive? Varda? I'm not What is listening. the second and third form of forgive? Second और third form क्या है? फिर से बोले बेटा, I'm not listening properly. Sir, second और forgive का second और third form क्या है? Okay, second जो है forgive, GAVE, और third है forgiven. Forgiven. Okay, sir. Is it clear? Okay. Gibran Shah. Yes. Gibran. Hello Ji, go and repay his loan and given him. Sir, you said that this a command sentence. Explain this. Beta, if you think about the structure of the sentence, अगर इस structure के बारे में देखिए ना, तो यहाँ पर देखिए ना, वो आप सल्लम ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। Go. Mostly the command sentence start with a verb. Starts with a verb. एक verb से start होते हैं, जिस तरह एक बंदा होता है बाहर खड़ा होता है, हम इसको stop there. So I am giving command here, and look at the structure. Stop is a verb here. Is it clear?
Okay, time finished. Okay. Yes. Okay, this is the end of the session of this lecture. Hope you have learned most of the thing, and if you have any question, any query, you can ask in the next lecture by tomorrow.